Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Om, Shweta, Priti, Manjunath, Venkatalakshmi, Anju, Ruchikta. Good afternoon, everyone. So, as we have discussed in the last class, कि आज की क्लास में सबसे पहले अपन रिवीजन करेंगे what we have discussed in the last lecture, and then we will have the self-assessment test. So, hopefully, all of you get revised your syllabus or your chapter unit 1. So, let's start with the revision. Okay, so starting with the offer, a person is said to made a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or action. It means offer can be for anything, for to do something or for not to do something, right? There are 5 types of offer. General offer, when offer is made to public at large. A specific offer, when offer is made to a specific person and only that person can accept the offer. But in case of general offer, offer is made to the public at large and only the first person who give his acceptance, then promise is made with that person. After that, तो कोई और accept नहीं कर सकता. Cross offer, when two parties making the identical offer to each other at the same point of time. Counter offer means conditional acceptance. Standing or continuing offer means general offer for a specific period of time. Legal rules of offer. First, it must be with the intention to create legal relationship. It must not be a social one. Offer must be clear, definite, and unambiguous. Must be communicated to whom it is made. Must be with a view to obtain the consent of the offeree. ये इच्छा होनी चाहिए कि भाई जिसको हम ऑफर कर रहे हैं वो उसके लिए हाँ कर दे. Offer may be conditional, but acceptance never be conditional. Offer must not contain the term the non-compliance of which amount acceptance. Offer may be specific or general. We have discussed. Offer may be express or implied by the conduct. Offer is different from the invitation to offer, and statement of price is not an offer as per the case decided in the case of Harvey versus Hess. Acceptance means confirmation, giving the consent. A proposal or offer is said to have been accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent to the proposal to do or not to do something. जब कोई ऑफर को हाँ या ना हाँ बोल देता है तो उसे क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस. लीगल रूल्स. एक्सेप्टेंस must be unqualified, unconditional. Offer acceptance must be communicated to the offerer. It should be in the mode prescribed. Remember, it should be within the time limit. If time limit is not mentioned in the offer, it should be within reasonable time, and reasonable time depends upon situation to situation. Silence is not an acceptance. Acceptance may be expressed or may be implied. Communication of offer, remember 1, 3, 7, 10. Okay. Communication of offer completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. That is 3rd January. Communication of acceptance is completed when, as against the proposer, offerer, when it is put into the course of transmission to him, so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. That is 7th January. As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. That is 10th. Communication of acceptance by post completed against the proposer when the letter of acceptance is posted, and as against the acceptor when the letter reaches to the proposer. We have already discussed it. Acceptance over telephone, telex, or fax completed when the acceptance received by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. Communication with special condition printed on the back of ticket, receipt, etc., whether in the knowledge of passenger or not, but treated as
passenger has accepted that. But there are some exceptions, यानी कि पैसेंजर लाइबिल नहीं होगा या जो एक्सेप्टर है वो लाइबिल नहीं होगा. किन केसेस में? कंडीशंस आर कंटेन्ड in the document and document is delivered after the contract is completed. Conditions limiting the right of acceptor are not brought to the notice of acceptor, and document does not give reasonable notice on the face that it contains certain special condition. यानी कि जो पर्ची या रसीद दी गई है उसके फ्रंट पे लिखा होना चाहिए कि पीछे कुछ स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है. रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है 5 to 6 marks का. What are the methods for revocation of offer and acceptance? First is by notice, by lapse of time if not accepted in the prescribed time. Non-fulfillment of condition if condition are given in the offer. Death or insanity of the offerer if counter offer is made. If offer is not accepted according to the mode prescribed. If law is changed. So this was the revision. Just prepare the sheet like that, and no need to send the answers to me. Good afternoon, pranam everyone. Good afternoon, sir. Places shown on the online shopping is an invitation to offer. Yes, no. आपको पोर्टल पे जो दिख रहा है वो जस्ट डेफिनेटली इन्विटेशन टू ऑफर है. ठीक है. If general offer cannot be accepted by more than one person, yes, एक बार accept हो गया दोबारा कोई नहीं कर सकता उसे. एग्जाम कब होंगे? अभी बेटा पढ़ लो एग्जाम, चिंता छोड़ो तुम. ये तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो तो लास्ट चैप्टर 1 डिस्कस किया था. अब इसके बाद हम चैप्टर 2 पे जाएंगे असेसमेंट टेस्ट के बाद. राइट. तो होपफुली ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस शीट. स्टार्ट करते हैं बच्चों. Which of the following is not legal requirement of a valid offer? इनमें से कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है वैलिड ऑफर के लिए? चैप्टर 1 कराया है बेटा मैंने, अभी चैप्टर 2 स्टार्ट होगा. क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा, ऐसा चैप्टर कौन सा है? Which of the following is not the legal requirement of a valid offer? It must be communicated to the offeree. It must be made with the view to obtain the offeree's assent. It must express offerer's final willingness. It must be made to a specific and not to public at large. Which is not legal requirement? Which is not legal requirement? Not. Notice of अभी डिस्कस करते हैं बेटा क्या पढ़ो. तो राइट आंसर इज डी. It must be made to specific and not to public at large. जबकि in fact offer can be a to a specific person or to public at large, right? Next, a general offer of a continuing nature can be accepted by the first 100 people, any first 10 people, any number of person until it is retracted. One person only who first accept the offer. But you need not to send the answers. The answer is it can be accepted by one person who first accept the. एक बार accept हो गए, once accepted cannot be accepted by another person. Next, the term acceptance in legal terms is defined in section 2 clause A, section 2 clause B, section 2 clause I, section 2 clause F.
The answer is section 2 clause B. Next question. Which of the following is not the legal requirement of valid acceptance? Valid acceptance not required. It must be communicated. It must be absolute and unconditional. It must be accepted by a person who has the authority to accept. It must be presumed from silence if not communicated within the specified time. The answer is acceptance cannot be presumed from silence. So the question was that which is not the legal requirement. So D point must be presumed from silence. The answer is D. हमें जो legal requirement नहीं है कौन सी नहीं है? It must be presumed from silence. Next. Read it carefully. A by letter dated 25th December 2020 offers to sell his house to B for rupees 50 lakhs. The letter reaches B on 27th December 2020, who posts his acceptance on 28th December 2020, which reaches to A on 30th December 2020. In this case, communication of offer is completed on 25th, 27th, 28th, 30th. The answer is beta 27th when it comes to the knowledge of the offering, right? An offer may be revoked by the offerer at any time before the letter of acceptance is posted by acceptor, received by offerer, read by offerer, none of these. The answer is when it is posted by the acceptor. Next. The legal rule relating to revocation of acceptance is that it can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against acceptor, offerer. Recording in progress. Offerer, acceptor's family, offerer's family. The answer is against the acceptor. Eighth question is one which is made to public at large. A specific offer, general offer, public offer, universal offer. It is general offer. Where the time is fixed for acceptance of the offer and it is not accepted within the fixed time, then offer automatically lapses on the expiry of fixed period. Offer can be accepted by paying penalty. Offeree loses his right to become a party to contract in future. Offer lapses, but only with the permission of court. So you have to select the best option. The answer is A. अगर टाइम लिमिट फिक्स है तो टाइम खत्म होने के बाद
ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज ऑफर और प्रोमिसर एंड टू whom it is made is known as acceptor, acceptor for owner, ऑफरी और प्रोमिजी, प्रोमिजी है ये, एस डबल ई, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो आंसर इज इट इज कॉल्ड एज ऑफरी। सो दिस वाज द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2 और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों यूनिट 2 कंसीडरेशन। क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी? जनरल ऑफर फॉर वैकेंसीज अवेलेबल फॉर टीचर्स पोजीशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय मोर देन वन पर्सन। नो, अगर वैकेंसी एक ही है तो इफ वैकेंसी इज ओनली वन कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा, इट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ऑफर तो कोई ऐसा होता ही नहीं बच्चे। एक सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन स्लाइड पर देख रहा हूँ बच्चों, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 था अ जनरल ऑफर ऑफ ए कंटिन्यूइंग नेचर कैन बी एक्सेप्टेड। भैया ऑफर एक है तो एक ही जन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना? तो बेस्ट आंसर इज डी। और क्या क्वेरी है? समवन इज सेइंग सर यूनिवर्सल ऑफर जैसा कुछ नहीं होता, तभी तुमने लिख के दिया बेटे, आपको फाइंड करना है जो करेक्ट है। जनरल ऑफर इज पब्लिक ऑफर, तो हाउ इट कैन बी डिफरेंट बेटा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, कंसीडरेशन। Consideration means something in return. So first you understand the concept of consideration. What is the meaning of consideration? I am purchasing a book for 100 rupees. I am purchasing a book for 100 rupees. What I am getting? Book. And what I am giving? 100 rupees. Right? मैं एक किताब खरीद रहा हूँ 100 रुपए की, तो मुझे क्या मिल रहा है? किताब मिल रही है, मेरे पास से क्या जा रहा है? 100 रुपए। तो जो मैं दे रहा हूं 100 रुपए, उसके बदले में जो मिला दैट इज कंसीडरेशन फॉर मी। तो बुक इज द कंसीडरेशन फॉर मी एंड 100 rupees is consideration for the person who is selling the book, right? So what I get in return is called consideration in a contract. ठीक है? तो section 2 clause D defines when at the desire of promisor the promisee or done or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. क्या कहा? First thing, consideration means something in return. What I am getting in return is called consideration. What I got is called consideration. Section 2D defines करता है, किसको define करता है बच्चों?
कंसीडरेशन। कंसीडर क्या कहता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कि आई एम प्रोमिसर, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं परचेज करने के लिए, देन आई एम प्रोमिसर, तो कंसीडरेशन शुड बी एट माय डिजायर, कंसीडरेशन शुड बी एट माय डिजायर, द promisee or any other person. It means consideration can be given by promisee or any other person, यानी कि promisee के बिहाफ पर कोई और भी मुझे दे सकता है। Has done or abstain from doing something, यानी कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए। Such act, ये करना और abstinence नहीं करना क्या कहलाता है? Consideration. तो consideration may be for doing something or not to do something, right? In the form of to do something, not to do something. कंसीडरेशन शुड बी एट माय डिजायर, यानी कि जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो मुझे जो कंसीडरेशन मिलेगा वो मेरे अकॉर्डिंग मिलेगा, कुछ थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं। बट कंसीडरेशन कैन बी गिवन बाय द promisee or any other person. So this was the definition. Just read the examples on and legal rules, then we will come again the definition. So what we get from the definition, consideration may be act that is doing of something. See the example. Example 1, A guarantees B for the payment of price of goods which B wanted to sell on 1 month credit to C. Here selling of goods on credit by B to C is consideration for A's promise. क्या है क्वेश्चन? A ने गारंटी दिया B को पेमेंट की कि आप सी को माल बेच दो, 1 महीने में पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। A is giving guarantee for making the payment, and what he is getting in return, he is getting the act of selling of goods by B to C. B ने C को जो माल बेचा, जो C को माल बेचना ही A के लिए कंसिडरेशन होगा। तो ये चीज क्या कहलाई? एक्ट, कुछ वर्क। रीड अगेन। A guarantees B for the payment of price of goods which B wanted to sell on 1 month credit to C. Here selling of goods on credit by B to C is the concession for A's promise. A ने गारंटी दिया B को कि भाई आप C को माल बेच दो, अगर C पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा। तो A गारंटी दे रहा है, A को बदले में क्या मिल रहा है? B के द्वारा C को माल बेचना। यह क्या कहलाएगा? कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। वन मोर एग्जांपल। A college promises student for the job in MNC, all who will score above 95%. Here the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student scoring 95%. तो ये भी कंसिडरेशन हो गया किसका? प्रॉमिस बाय स्कूल, कॉलेज। कॉलेज ने प्रॉमिस किया कि भैया जिनके 95% आएंगे उन्हें हम जॉब की गारंटी देते हैं, तो ये भी कंसिडरेशन हो गया कॉलेज के। कंसिडरेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ एब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंसेस। अब बहुत लोग पूछे सर एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है? नॉट टू डू समथिंग, कुछ नहीं करने का। एग्जाम्पल नंबर 3, C promises his debtor D not to file a suit against him if he agrees to pay 10,000 more on the principal amount. Here the abstinence of C is the consideration for D promised to pay. C ने प्रॉमिस किया D से कि अगर आप मेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं करोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। C promised debtor, C ने क्या प्रॉमिस किया D से कि अगर आप मेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं करोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये कंसिडरेशन हो गया किसके लिए? 10,000 रुपए कौन देगा? सी देगा डी को। तो डी का कंसिडरेशन क्या होगा? लिसन, सी डी को देगा 10,000 रुपए। सी प्रॉमिस हिज डेटर डी नॉट टू फाइल द सूट, कि भाई अगर आप मेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं करोगे तो मैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। राइट बच्चे? तो सी तो 10,000 रुपए दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? सी इज गिविंग 10,000 रुपीज, बट व्हाट ही इज गेटिंग इन रिटर्न? D's promise not to file the suit is the consideration for, right? Consideration may be in form of written promise. A promise to maintain B's child
and B promised to pay A rupees 1,000 yearly for this purpose. A ने कहा कि मैं B के चाइल्ड को संभालूंगा, B ने कहा मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा साल के. ये रिटर्न प्रॉमिस हो गया. एक चीज वो दे रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं. तो नॉर्मली कंसेशन इज इन द फॉर्म रिटर्न प्रॉमिस, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न प्रॉमिस. रीड करिए बच्चों. नाउ कम टू द लीगल रूल्स. तो लीगल रूल्स एक्चुअली हमने फाइंड आउट की डेफिनेशन में से. जो डेफिनेशन थी उसी को हम एक्सप्लेन करें तो लीगल रूल्स कहलाएंगे. When we explain the definition, we will get the legal rules for consideration, right? सर हाउ टू लर्न ऑल सेक्शन, प्लीज ये तो आप अपने आप डिसाइड करो बच्चों. लर्न लिख लिख के याद करिए, प्लीज लर्न बाय राइटिंग. If the condition in an offer are such that they can be completed by many, then in that case the offer is known as general offer. Continuing nature, option C is more appropriate. Beta, I have told you the answer is D was the right answer for question number 2. Because in case of general offer, once accepted cannot be accepted by any other person, right? Forbearances I have discussed. Act doing something I have discussed. क्या चीज हो गया? You can read my question. Yes, मैं डिस्कस. आपका प्रभात का क्वेश्चन नहीं आया कोई अभी. One is asking, sir, can more than one people can accept a offer? How is possible? Legal rules. First is consideration must move at the desire of promisor. यानी कि if contract is entered between two people, for example, I have entered in a contract with Mr. X and I want to sell my car for 1 lakh rupees. Okay, the contract was for selling of one car for 1 lakh rupees between me and Mr. X. So for 1 lakh rupees, I am the promisor, and the 1 lakh rupees is consideration for me because I am selling my car. ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ मिस्टर एक्स के साथ, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स मुझे 1 लाख रुपया, राइट. अब 1 लाख कंसिडरेशन है मेरे लिए और कार कंसिडरेशन है मिस्टर एक्स के लिए. 1 लाख रुपए के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको गाड़ी बेचने का, तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपए. बट दिस कंसिडरेशन शुड बी डिसाइडेड बाय मी. 1 लाख लेना है मुझे, ये मैंने डिसाइड किया. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन कम्स एंड आस्क मिस्टर एक्स, you not need to give the 1 lakh rupees, you just give 90,000 rupees. Is it possible? No. मान लीजिए कोई आदमी एक्स के पास आया, बोला सर आपको जरूरत नहीं है देने की 1 लाख रुपया, 90,000 बहुत है. तो इज इट गुड? पॉसिबल है? नहीं है ना. इसका मतलब जो मेरा कंसिडरेशन है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी. तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर एंड एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट ए कंसिडरेशन. किसी और के कहने पे जो डिसाइड हुआ वो कंसिडरेशन नहीं माना जाए. सी आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो. R cannot demand any reward for his service as the act being done voluntarily. भाई आपने मेरे से पूछा ही नहीं, आर ने एस का गुड बचाया फायर से, लेकिन आर ने कभी नहीं कहा, एस ने कभी नहीं कहा था गुड्स बचाओ मेरा. तो क्या आर कंसिडरेशन डिमांड कर सकता है? नो, बिकॉज नॉट डिसाइडेड बाय. क्लियर नहीं बात? क्वेश्चन एग्जांपल क्या है?
आर ने एस का गुड बचाया, लेकिन आर ने तो एस ने तो कभी कहा ही नहीं था बचाने के लिए। तो क्या आर कंसिडरेशन डिमांड कर सकता है? आंसर इज एज पर द लॉ। ये अच्छा एग्जाम्पल है। पहले मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, देन कम टू द पॉइंट। टॉपिक था ये कंसिडरेशन फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, राइट। एग्जाम्पल नंबर 6, केस वाज चिनाया वर्सेस रामायण। केस क्या था? पहले फर्स्ट आई रीड। An old lady made a gift of her property to her daughter with the direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. Annuity means annual payment, right? एक ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को गिफ्ट कर दी और ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको हर साल कुछ पेमेंट आपकी मैटरनल अंकल को आपको पेमेंट करना, यानी मामा जी को पेमेंट। ओल्ड लेडी गिफ्टेड हर ऑल प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद द कंडीशन, with the direction that daughter will pay an annual sum to her maternal uncle. Clear? यहाँ तक clear है? On the same day, the daughter executed a writing in favor of brother of mother, agreeing to pay the annuity. The daughter did not, however, pay the annuity, and the uncle sued to recover. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. So this was the case in short form. I just repeat. One old lady has gifted her property to her daughter with the condition that daughter will pay an annual sum to her maternal uncle. But on the time of payment, daughter denied to make the payment to the uncle with the words that if I am giving annual sum to my uncle, what I am getting in return. And as I am not getting any consideration, the contract is without consideration, hence void. एक ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटी को दे दी इस कंडीशन के साथ कि बेटी हर साल एक अमाउंट अपने मामा जी को दे। जब पेमेंट करने की बारी आई तो बेटी ने ये कह के मना कर दिया कि मैं अगर पेमेंट कर रही हूं अपने मामा को तो बदले में मुझे क्या मिले। अगर बदले मुझे नहीं कुछ मिल रहा है तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। और एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। बट व्हाट द कोर्ट सेड? कोर्ट सेड it is not necessary that you get the consideration from promisee. If you are getting consideration from someone else on that behalf, it is sufficient. So you are getting the consideration not from uncle, but you are getting the consideration from your mother. And hence, this is the sufficient consideration and you should pay the amount to your uncle. कोर्ट ने क्या कहा? ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन आपको डायरेक्ट उसी से मिले जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको किसी और से भी मिला उस बिहाफ पर तो वो सफिशिएंट माना जाए। इस केस में आपको कंसिडरेशन आपको मामा से नहीं मिल रहा लेकिन आपको मदर से मिल रहा है, तो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है एंड यू हैव टू पे द एन्युटी अमाउंट, एनुअल सम अमाउंट टू द मैटरनल। So this was the case. Now come to the provisions. So consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to contract. In other words, there can be a stranger to consideration but not a stranger to contract. Means कि consideration part के लिए there may be stranger but not for contract. In contract, stranger cannot file the suit, but if he has the right for consideration, he can file the suit, even he was the stranger at the time of making the contract.
लॉ ने क्या कहा कि थर्ड पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है लेकिन कंसिडरेशन का राइट है उसके पास, तो वो क्लेम कर सकता है इवन दैट वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, and executory, that is future consideration, means consideration would be received in future after the entering into the contract. See example numbers. A pays rupees 5,000 to B and B promised to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. A ने 5,000 रुपए B को दे दिए और B ने कहा मैं 1 महीने बाद आपको गेहूं की सप्लाई करूं। In this case, A pays the amount at the time of contract, while B is making the promise to deliver the wheat after the month. So the consideration paid by A is present consideration, and consideration which will be paid by B is future consideration. ठीक है? Sir, when will you give the previous class notes? Previous class notes are uploaded on the app of ICI. Sir, general offer IPO also come. Beta, IPO is not general offer, it is invitation to offer. Notice of revocation, notice means information providing, information देना कि हम revoke कर रहे हैं. Tender of a general or standing. Normally tender are published in the newspaper, or they are invitation to offer. ठीक है? और क्या है? ICI ऐप प्लीज आप BOS से कांटेक्ट कर लीजिए बेटे। चलिए, आई से पूछ रहा है बच्चा ICI ऐप नहीं चल रहा, तो एक बार बेटा आप BOS पे देखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। Past consideration, we have discussed present consideration, we have discussed future consideration. Present consideration means consideration received at the time of contract, future after the entering into the contract. But what is the past consideration? As per the language, as per the word past consideration, it means the consideration is already received before entering into the contract. Means today the date is in 19th June. Contract is entering into 19th June, but consideration was received before today. आज की तारीख से पहले ही मिल गया, called past consideration. So you people say, sir, how it is possible? See the example. A teaches B at his desire. After a week, B promised to pay fees of 2,000. A can sue B for recovering the promised money. चलिए, मैं और अच्छे समझाता हूँ. See, one person, Mr. A, comes to me in the month of June and request me to teach the law and say, sir, I don't have money to pay your fees. I said, okay, I will not take the fees. You please, I will teach you definitely. And I have given the classes for law to that person. And in the month of December, when he given the exam, and in January, he got the result of foundation as passed. After the passing the CA foundation, he told me that is in January. See, let's see, I have taken the classes for him for law in the month of June 2023. But suppose when he got cleared in 2024 January and he told me, sir,
I will pay the fees for teaching me 6 months before. Right? I said, okay, contract was entered. The student will give me the fees in January 2024. But the date of entering into contract, January 2024. But my performance was done in 6 months before June 2023. एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे बोला, सर मुझे पढ़ा दीजिए, मेरे पास फीस नहीं है पैसे नहीं फीस देने की। बच्चे ने, मैंने कहा ठीक है पढ़ लीजिए। मैंने जून 2023 में उसे लॉ पढ़ाई, दिसंबर में उसका एग्जाम हुआ, जनवरी 2024 में उसका रिजल्ट आया और वो क्लियर कर। जनवरी 2024 में वो मेरे पास आया कि सर मेरे पास पैसे आ गए, मैं आपको फीस देना चाहता हूँ पढ़ाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इन जनवरी 2024, बट परफॉर्मेंस उसे कंसिडरेशन कब मिल गया बेटे स्टूडेंट को? इन द जून 2023। एंड दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा ये? पास्ट कंसिडरेशन। ऑन इन द मंथ ऑफ January 2024, the consideration received to me is present consideration, but in the for student it is past consideration. जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे पैसे जनवरी में मिल रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया? प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन जो स्टूडेंट था उससे कब मिल गया? जून में, 6 महीने पहले, तो उसके लिए क्या हो गया? पास्ट कंसिडरेशन। राइट? एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। लॉ सेज there must be consideration in contract, there must be something in written in the contract, but need not to be the equal value. लॉ ने ये तो कहा कि कंसीडरेशन होना चाहिए, पर सेम अमाउंट का होना चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सी द एग्जांपल। ए एग्रीज वॉलंटरली to sell his motorcycle for rupees 2000 only to B. It is a valid contract even the consideration is inadequate. A ने कहा मोटरसाइकिल में 2000 में बेच रहा हूं, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल उसने मन से अपने 2000 बाइक बेच रहा है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही कंसिडरेशन इसमें प्रॉपर नहीं। कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, X promises to sell a house worth rupees 6 lakh for 1 lakh only. The adequacy of the price in itself shall not render the transaction void unless the party pleads that transaction take place under the coercion, influence or fraud. Means the house worth 6 lakhs and party is offering for 1 lakh with free consent, कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर, contract is perfectly valid. Right? Performance of what one is legally bound to perform. Next point is कि अगर कोई चीज को करने के लिए आप ऑलरेडी बाउंड हैं तो वो कंसिडरेशन नहीं, उसके लिए आप कुछ कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते। फर्स्ट यू सी द एग्जांपल, देन आई एम टेकिंग द प्रोविजन अगेन। A promise to pay rupees 1000 to a doctor over the fees is invalid as it is the duty of a doctor to give a treatment for his normal fees. A ने प्रॉमिस किया, ए का प्रॉमिस डॉक्टर को कि साहब जो आपकी नॉर्मल फीस है उससे मैं आपको 1000 रुपए ज्यादा दूंगा, नॉर्मल फीस से 1000 रुपए ज्यादा। नॉर्मल फीस इज फॉर ट्रीटमेंट and then why 1000 is giving? Whether you are getting anything additional for 1000? If answer is yes, then consideration is valid. But if you are not getting anything additional for 1000 rupees, then it is not a valid. डॉक्टर से कहा सर मैं जो आपकी नॉर्मल फीस है उससे आपको 1000 रुपए ज्यादा दूंगा, तो डॉक्टर का काम है नॉर्मल फीस में ट्रीटमेंट देने का, वो कंसिडरेशन है। आप जो 1000 रुपए दे रहे हो एडिशनल, आप जो 1000 रुपए एडिशनल दे रहे हो उसके लिए बदले में आपको क्या मिल रहा है? अगर कुछ एडिशनल सर्विस मिल रही है देन 1000 इज द वैलिड कंसिडरेशन, अगर नहीं है तो इट इज नॉट ए वैलिड।
So provision says performance of what one is legally bound to perform. Consideration must not be performance of existing duty. आपकी जो existing duty है उसके लिए कोई additional consideration नहीं हो सकता. The performance of an act by person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for contract. जो आप करने के लिए बाध्य हैं उसके लिए आप additional consideration claim नहीं कर सकते. Right? Consideration must be real and competent. वास्तविक होना चाहिए, रियल में दिखना चाहिए. इट मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैच सम वैल्यू. द कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू. सी द एग्जांपल नंबर 12. ए मैन प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. जादू से मैं खजाना ढूंढ दूंगा. इट इज अ नॉट अ रियल कंसिडरेशन बिकॉज इट इज नॉट अ पॉसिबल. One more example. I have discussed this example in previous classes. A agrees with B to put the life in dead wife. How is it possible? It is impossible. Impossible thing act is not a consideration. The agreement cannot be enforced as it is not possible to perform. A ने B से कहा मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर दूंगा. ये पॉसिबल नहीं है तो कंसिडरेशन भी नहीं होगा. राइट? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. कोई गैर कानूनी नहीं होना चाहिए. इमोरल बैड करेक्टर नहीं होना चाहिए. एंड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. कोई ऐसा नहीं हो जिससे पब्लिक को नुकसान. सी द एग्जांपल. ए आस्क बी आई विल किल यू. I will give you 1 lakh rupees if you kill C. It is illegal, unlawful. A ask B, I will give you a bottle of wine if you do work for me. The consideration is immoral, bad character. A ask B, I will purchase your car for something not clear. There is no contract. Consideration is uncertain. So this was the first part, but I am taking your queries from your side. रिवोकेशन मतलब खत्म होना. बच्चे ये तो बहुत सिंपल सी बात है. सर रिवोकेशन का मतलब क्या है? 11 नंबर एग्जांपल. एक सेकेंड. पलक इज आस्किंग सर एग्जांपल नंबर 11 कॉन्ट्राडिक्टिंग एडिक्वेसी पॉइंट. नो, आई डोंट थिंक सो कि इनएडिक्वेसी पॉइंट है. ये तो सिंपल वो था कि 1000 रुपीज एडिशनल पे कर रहा है. फॉर व्हाट ही इज गेटिंग. मान लीजिए डॉक्टर की फीस. लेट्स सी डॉक्टर फीस इज रुपीज 500 फॉर ट्रीटमेंट and I promise doctor to pay 1000 rupees extra for treatment. So treatment fees for treatment is 500 and what I am getting for 1000 rupees additional. If I am not getting anything additional service, so 1000 is not a consideration. Doctor cannot claim that amount. This receiving lottery is the consideration or not? I think lottery is not. How is possible? आप क्या कहना चाह रहे हैं? Receiving lottery. So this is the time of penalty shootout. Then after that we will have the break of 10 minutes. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू. Consideration must move from the promisee, may move from the promisee or any other person, must move from the third party, may move from the promiser. Listen once again. Please send all the answer in one shot. एक बार में सारे भेजने हैं आपको, तभी मैं कंसीडर करूंगा.
ए और एक चलिए इसके बाद लेता हूँ क्वेरी, बच्चों की 2-3 क्वेरी है वो लेता हूँ। सेकंड पॉइंट, consideration must move at the desire of promiser, promisee, promiser or any third party, both the promiser or the promisee. Third question, consideration may be executed, executory, none of the above, both of the above. No need to send answers one by one. Please send all the answer in one shot. Consideration must be equal to the value of what is received. Consideration must be equal to the value of what is received. True or false? Next. Sunny enters in a contract with Bobby to kill Abhay, and in consideration he will pay rupees 5 lakh. Whether this contract is enforceable? True, false की जगह आप कह सकते हैं yes or no, right? Next. There an impossible act forming consideration in a contract. It is regarded that there is no consideration, inadequate consideration, past consideration, none of these. बच्चों ये तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को. Last. An agreement made with free consent to which the lawful consideration is any inadequate is void, valid, voidable, unlawful. ये तो हो गए, अभी आंसर ले रहा हूं, पर एक क्वेश्चन था, ए ऑफर्स टू पब्लिक whosoever eats 10 golgappas from his shop in 30 seconds will get 100 rupees. Is it a general offer of continued nature and can be accepted by more than one person? ये पूछ रहे हैं सर कि एक आदमी पब्लिक, एक गोलगप्पे वाले ने ऑफर किया कि भैया जो 10 गोलगप्पे खाएगा 30 सेकंड में उसे मैं 100 रुपए. अभी जनरल ऑफर है तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. सर कंफ्यूज हो रहे हैं. उससे क्या एक ही बार इनाम देना था? ऑफर उसने वन टाइम किया या मोर देन वन टाइम का ऑफर कर रहा है वो? अगर उसको कहता कि सर मुझे एक ही को एग्जैक्ट इनाम देना है, जो मैं 100 रुपए दूंगा वो केवल एक पर्सन को दूंगा, तो दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली वन पर्सन. If I am selling my mobile and I'm just saying, sir, any one of the public can purchase my mobile for 100 rupees, right? तो मोबाइल तो एक ही है ना दोस्त, मैं एक ही बार तो बेच पाऊंगा उसे. वो जो जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहा है गोलगप्पे वाला, वो तो हर बार एक नया ऑफर दे रहा है, राइट? चलिए अब आंसर लेते हैं. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट कंसिडरेशन, मतलब जिस समय हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उस समय कंसिडरेशन मिल गया. फ्यूचर कंसिडरेशन. सी let's see you book a cake for your birthday party and the cake will be received by you at evening. You just go to the bakery and book your cake by giving the money, and you will get the delivery of the cake in the evening. आप अपना आपका बर्थडे है, आप केक बुक कराते हैं, केक आपने दिया, ऑर्डर किया दोपहर में कि भैया ये लो केक, मेरा शाम को केक चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू आर गिविंग द मनी,
and that is a consideration, present consideration, executed consideration for the bakeryman. And you will get the cake after the entering into the contract. That is after some time. That is the future consideration for you. That is the executory consideration for you, right? So let's take the answers. First, sorry. Consideration may move from the promisee or any other person, right? Second point, consideration must move at the desire of promiser. Third, consideration may be executed, present हो सकता है, executory future हो सकता है. The answer is D, both of the above. Fourth, consideration must be equal to the value of what is received. This is false. Consideration may be less than the value what we have get. Fifth point, Sunny enters into contract with Bobby to kill Abhay, and in consideration he will pay rupees 5 lakh. Whether it is enforceable? The answer is false. There is an impossible act forming consideration. Impossible act. It is no consideration. Next. An agreement made with the free consent to which the lawful consideration is inadequate. Inadequate, even that contract is perfectly valid. So who are the lucky one? The first one is Mr. Om Gupta. Congratulations, bache. Next one is Miss Niranjana. Congratulations. Next one is Miss P. Yamin. So congratulations all of you, and also I should congratulate all the persons who got all the correct answers. बच्चों ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट? एमसीक्यू ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर फ्री कंसेंट है, इन कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, तब भी परफेक्टली वैलिड, राइट? So at this place we have a short break of 10 minutes. Then we will rejoin and complete the chapter, right? We have a break of 10 minutes.
Welcome back, बच्चों. One query from your side. Mr. Saurabh is asking, sir, if doctor takes 1,000 extra, then he can take because consideration need not be adequate. Value of consideration may not be equal. ये कह रहे हैं कि सर डॉक्टर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ये हो सकता है क्योंकि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. बेटा आप गलत सोच रहे हैं. योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. हाउ यू कैन वैल्यू द सर्विस वैल्यू ऑफ डॉक्टर? what I'm saying, the motorcycle worth rupees 5,000 and selling for 2,000 is valid consideration. But how can you find the worth of a doctor for consultancy? तो ये दोनों अलग अलग चीजें. These are two separate questions, उन्हें merge मत कीजिए. Right? स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक इन कंसिडरेशन, दैट इज सूट बाय थर्ड पार्टी. नॉर्मली वी से अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल ए सूट. जो एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, I have entered into a contract with Mr. X to sell my car for 1 lakh rupees. I have given the car, but I have not received the payment. Whether Mr. Y can file the suit for car for 1 lakh rupees. मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं अपनी कार उन्हें 1 लाख में बेचूंगा. मैंने कार दे दी, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए. क्या एक अनजान आदमी मिस्टर वाई सूट फाइल कर सकता है मिस्टर एक्स के ऊपर? द आंसर इज नो. बट इफ मिस्टर वाई वाज इन contract for consideration, then he can file the suit. There are some cases, some specific cases, in fact you can say some examples in which a third party can claim for consideration. See, what are these? A stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract. Remember, doctrine of privity of contract. Example, P has taken a loan from Q. P ने लोन लिया Q से, and P sells his property to R and R promised to pay off the debt amount to Q. P ने प्रॉपर्टी R को बेच दी. R ने P से प्रॉमिस किया कि वो Q का जो लोन है वो चुका देगा. If R fails to pay, then in this situation Q has no right to sue. R is a stranger to contract, but P can file the suit on. P ने लोन लिया Q से और P ने सारी प्रॉपर्टी R को बेच दी. R ने प्रॉमिस किया P से कि वो जो लोन लिया था ना भैया आपने Q से, वो मैं चुका दूंगा. लोन नहीं चुकाया, तो क्या Q क्लेम कर सकता है? आंसर इज नो. P क्लेम कर सकता है? आंसर इज P किससे क्लेम कर सकता है? R से. पर Q R से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड बिटवीन P एंड R. Q was not a party to the contract, right? But whether Q can claim from P? Definitely yes, because the loan contract was between P and Q, right? Right? So exception to the rule, यानी कि these are the exceptions where a stranger can file the suit. Even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. He is party for consideration. First case is trust. So what is the meaning of trust? Let's suppose Mr. X has created a trust and transfer his property in the trust. एक trust बनाई और उसमें अपनी सारी property X ने transfer कर दी. And he appointed Mr. Y for taking care, as a caretaker. क्या कहलाएंगे वो? Trustee, right? The Mr. X has created a trust and transferred his property in the trust.
and Mr. Y was appointed trustee for the trust. Mr. X has made the beneficiary his son. उन्होंने कहा सर इसका जो बेनिफिशियरी होगा, जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? सन को मिलेगा. तो सन इज बेनिफिशियरी, मिस्टर वाई इज ट्रस्टी एंड मिस्टर एक्स इज जिन्होंने ट्रस्ट बनाया. क्वेश्चन अराइजेस, द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड between X and Y for trust. Whether son can claim is in this contract. See, and we will come again on this topic. First, you see the example. Mr. X transfer his property to his friend in trust in favor of his son. अपने बेटे के भले के लिए जो भी ट्रस्ट में से बेनिफिट होगा उसका पैसा किसको मिलेगा? बेनिफिट किसको मिलेगा? बेटे को मिलेगा. On the death of Mr. X, friend refuses to give the benefit to son. Mr. X की डेथ हो गई, फ्रेंड ने मना कर दी, बेनिफिट में सन को नहीं दूंगा. But now son can claim from Mr. X, Mr. Y. I think this is the wrong answer. It should be a Mr. Y, even if he was not a part. So in case of trust, beneficiary can claim from the trustee. In case of trust, a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to contract between the settler and the trust. Mr. X ने ट्रस्ट बनाई, ही इज द सेटलर. ट्रस्टी कौन है? उनके फ्रेंड. किसके फेवर में थी? उनके बेटे के फेवर में थी, यानी बेनिफिट को मिलना है, बेटे को मिलना है. तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्चुअली एंटर्ड, द पार्टीज आर मिस्टर एक्स एंड हिज फ्रेंड. बट एज सन वाज बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, he can claim the benefit of the trust. This was the first exception of the rule doctrine of privity of God. Doctrine means principle, right? सन, देखिए एक क्वेश्चन आया अभी सर, if son is minor, listen, we will discuss in the next class even, but I am just giving a small idea. Minor has a right everywhere. लाइबिलिटी नहीं होती माइनर की, पर राइट पूरे होते हैं, राइट? तो सन माइनर हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, सी द एग्जांपल, देन वी विल कम ऑन द प्रॉब्लम. A father has transferred all his property to his two sons on the condition that each of them will pay 10,000 to their mother. Son refuses to pay. एक फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी और इस कंडीशन के साथ कि दोनों बेटे माँ को 10,000 रुपए देंगे. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? फादर एंड सन के बीच में. बट मदर हैज राइट टू क्लेम कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज शी गॉट द राइट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. बेटे क्या कहते हैं कि हमें मदर से क्या मिल रहा है? द आंसर इज अगेन नो. केस ऑफ चिनाया वर्सेस रमाया, son are getting consideration from the father. तो लॉ क्या कहता है? In case of family settlement, if the terms of the settlement are in writing, must be, underline कीजिए, in writing, the members of family who originally had not been party to settlement may enforce the agreement if they are they having right for consideration in the. भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थे, लेकिन उनका जिक्र था कंसिडरेशन के लिए, तो क्लेम कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज दिस? प्लीज रीड, देन आई विल डिस्कस. A female member can enforce a provision for marriage expenses made on the partition of Hindu undivided family. In Hindu religion, there are concept is a Hindu undivided family that is considered in income tax also. In Hindu undivided family, that is called HUF. In HUF, the joint family, as per the law, in case of HUF, female can enforce the
provision of marriage expenses on the partition of HUF, यानी कि फैमिली जब डिवाइड होगी तो जो फीमेल मेंबर है जो खर्चा हुआ उसकी मैरिज, जो गिफ्ट मिले वो क्लेम कर सकते, राइट। In case of assignment of contract, please underline assignment. Assignment means transfer. Assignment of contract. Please see the example, then we will come on this example. Mr. A has assigned his insurance policy to his son. यानी कि मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी. I have transferred my insurance policy to my son. यानी my son will get the right on the insurance policy. Now son can claim even if he was not a party to contract. It means when at the time when I have taken the insurance policy, the insurance company and me are the party to the contract. But after some time, I have transferred my insurance policy to in favor of my son. Now son can claim the amount on the insurance. So in case of assignment of a contract, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the right. क्लियर इतनी बात कि अगर मैं अपना कुछ राइट ट्रांसफर कर रहा हूं तो जिसको ट्रांसफर किया वो क्लेम कर सकते. इन केस ऑफ एन एस्टॉपल, एस्टॉप मतलब होता है रोकना, स्टॉप. स्टॉप मींस रोकना, स्टॉप करना. एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी. एक्नॉलेजमेंट मींस कंफर्मेशन. इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी लायबिलिटी को कंफर्म एडमिट कर रहा हूं तो मैं बाद में मना नहीं कर सकता. इट मींस इफ आई एडमिटिंग माय लायबिलिटी देन आफ्टरवर्ड्स आई कैन नॉट डिनाई फॉर. In case of an estoppel by acknowledgement of liability or part performance thereof, that is when one admits the liability. Once I admitted the liability, I cannot deny after. L gives to M rupees 2,000 to be given to N. And M informs N that he is holding the money for him. But afterwards, M refuses to pay the money and will be entitled to recover the same from the fund. L ने M को 2,000 रुपए दिए जो N को देने थे. M ने ओके किया, सर मैं दे दूं, मेरे पास आ गए पैसे. बाद में M ने रिफ्यूज किया. As per law, N can recover the money from M क्योंकि M ने अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर दी. Contract made by agent. Contract made by agent. If principal, if the contract, listen, principal can enforce the contract entered by his agent where agent has acted in the scope of the authority and in the name of principal. I have appointed Mr. X as my agent. मैंने Mr. X को अपना agent appoint किया कि जाओ और मेरे लिए एक बॉल पेन खरीद लाओ. I have appointed Mr. X as my agent and I asked him to purchase a ball pen on my behalf. Agent has given the money to the shopkeeper, but he did not give the ball pen. So in that case, the contract was entered between agent and the shopkeeper, but even that I have the right to file the case on the shopkeeper for the recovery of the ball. अगर मैंने एजेंट अपॉइंट किया है किसी को, मैंने एजेंट अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को कि जाओ मेरे बिहाफ पर एक बॉल पेन ले आओ. एजेंट ने बॉल पेन का पैसा दिया लेकिन शॉप दुकानदार ने बॉल पेन नहीं दिया. कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हुआ एक्चुअल में किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ किसके बीच में? दुकानदार के बीच में और एजेंट के बीच में. मेरे बीच में मैं पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन क्योंकि एजेंट मेरे बिहाफ पे काम कर रहा था, आई एम द प्रिंसिपल, मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ. P appoints A as his agent to sell his house. A sells the house to T. Now P has a right to recover the price from C. P ने A को अपॉइंट किया अपने एजेंट के रूप में कि भैया मेरा घर बेच दो. A ने घर बेच दिया T को, तो उसका पैसा P भी रिकवर कर सकता है. क्लियर इतनी बात? एक पॉइंट रह गया बीच में, एक सेकेंड. चलिए 7 point. In case of covenant running with the land. Covenant means restrictions कह सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, कोई कंडीशंस कह सकते हैं.
In case of covenant running with the land, the person who purchases land with notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting the land, the covenant affecting the land may enforce by successor of the seller. To understand this provision, you should understand this example number 20. What is the example? If once you please read. One owner of the land having two land adjacent to each other. Adjacent मतलब एक दूसरे जुड़ी हुई. One was agriculture land and he holds the other land and he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land, so whosoever is the successor of the land has to abide by it. Such are called restrictive covenants and all successors are bound to it. क्या कह रहा है इसमें? एक आदमी था, उसमें दो जमीन थी, दोनों जुड़ी हुई थी, एक एग्रीकल्चर लैंड थी उसमें से. उसने दूसरी जमीन बेची इस कंडीशन के साथ, सेलर को बोला कि जब भी आप ये जमीन बेचोगे, दूसरी वाली जमीन आपको बेच रहा हूं, आप कभी भी इसे इंडस्ट्री के रूप में यूज नहीं करेंगे, कमर्शियल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो जमीन पहली जमीन है एग्रीकल्चर लैंड, उससे नुकसान हो जाए. यानी कि उसने क्या लगा दी? रेस्ट्रिक्शन लगा दी. एक आदमी पे दो जमीन थी, उसने क्या किया? दूसरी जमीन बेची, पहली एग्रीकल्चर लैंड थी, और जब दूसरी बेची तो ये कंडीशन लगा दी कि भाई इस जो जमीन दूसरी बेच रहा हूं, इस कंडीशन के साथ बेच रहा हूं, इस पे कभी भी कोई इंडस्ट्रियल वर्क नहीं होगा. अगर वर्क होगा तो मेरी पहली जमीन खराब हो जाएगी. ये उसने, इसे क्या बोलेंगे हम? कॉवेनेंट्स, रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स. तो इस जो बायर है उस जमीन का, उसे और जो आगे बायर होंगे उन सबको इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा. यानी कि ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? जो पहला ओनर था और जो सेलर था, जो बायर था. लेकिन बाद में भी जो बायर होंगे उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लागू होगी. तो इन केस ऑफ covenant running with the land, the person who purchases land with notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting land, the covenants affecting the land may be enforced by successor of the seller. यानी कि सेलर के बाद जो भी लोग आएंगे उनको भी फॉलो करना. तो अभी हमने जो पढ़े पॉइंट, वो क्या थे पॉइंट बच्चों? एक्सेप्शन क्या थी? पहली, इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी हैज द राइट. सेकंड इज in case of family settlement, mother has right to claim if the from the sons. थर्ड पॉइंट था हमारा इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स. आई हैव डिस्कस यू कि HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली के केस में अगर फैमिली डिवाइड हो रही है तो जो फीमेल मेंबर है उसको जो शादी के टाइम पे जो गिफ्ट मिले थे वो सारे क्लेम कर सकती है अपने फादर इन लॉ, भले ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं. तीसरा था ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर दिया तो जिसको ट्रांसफर किया वो क्लेम कर सकता है. नेक्स्ट था हमारा एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी. अगर मैंने कोई लायबिलिटी एडमिट कर ली तो बाद में मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं, भले मैं कॉन्ट्रैक्ट में ना हूं. कॉन्ट्रैक्ट अगर एजेंट के द्वारा किया जा रहा है तो प्रिंसिपल को पूरा राइट है उस पर क्लेम करने का. और लास्ट पॉइंट था अगर कॉवेनेंट्स लगे हैं लैंड पर और लैंड बेची जा रही है तो जितने भी सक्सेसर होंगे, बाद वाले होंगे, उन्हें भी वो रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी. तो दीज वर द रूल ऑफ एक्सेप्शंस for doctrine of privity of contract. Now, the point whether contract without consideration is valid, the answer is no, but some exceptions. The general rule is that agreement made without consideration is void. Section 20. एक सेकंड बच्चों, मैं क्वेरी देख लूं पहले से स्टार्ट करने से पहले. सौरभ, मैंने आपकी क्वेरी ले ली बेटे. थर्ड रूल समझा दिया बेटे मैंने आपको, थर्ड एक्सेप्शन समझा दी सभी लोगों को. सौरभ बता दिया मैंने. The principal has the right to recover from other party if contract is made entered by agent on the behalf of principal. The principal has the same right as that of agent.
मिस्टर यश बेटा, आप कैसे क्वेश्चन, मतलब अभी जो चल रहा है आप प्लीज उस पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चलिए मैं आपको प्रॉब्लम लेता हूँ बीच में, जो चल रहा है उस पर प्लीज फोकस करिए. द जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void. Section 25 says, however, in the following cases, the agreement though made without consideration will be valid and enforceable. यानी कि ये कुछ केसेस हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परफेक्टली वैलिड है. नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सी, if I want to gift my property, my flat to my sister on account of natural love and affection, it is perfectly valid even without consideration. But this should be written and registered. It should be written and registered. A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration. A husband by registered agreement promised to pay his earning to his wife. This is a perfectly valid, right? Next point, first हो गया natural love and affection. Compensation for past voluntary services. Remember, past consideration we have discussed in the first hour. At the time of making the contract, one party is giving consideration but not getting anything because he has got in the past. But past consideration is valid. Following conditions should be there. A promise to pay the past voluntary service is binding. The following essential factor must exist. The service should have been rendered voluntarily. Taking the example of teacher and student. Voluntary means without any pressure. मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला गया था, तो मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने अपनी इच्छा से पढ़ा. सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर. जो आज प्रॉमिस कर रहा है फीस देने का, सर्विस मैंने उसी को प्रोवाइड की थी. द पर्सन हु इज गिविंग द प्रॉमिस फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फीस, द सर्विसेज मस्ट बी गिवन फॉर दैट पर्सन. द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ व्हेन सर्विस वाज रेंडर्ड. जिस समय सर्विस दी गई उस समय वो जिंदा होना चाहिए. एंड प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रॉमिस. और जो प्रॉमिस कर रहा है पैसा देने के लिए, his intention that he is compensating for what he has received in the past. यानी कि वो उस चीज का पैसा दे रहा है जो उसे वो पास्ट में रिसीव हो चुका. See the example 25. P finds R purse and gives it to him. P को R का पर्स मिला, उसने वापस कर दिया. R ने प्रॉमिस किया कि P को 1000 रुपए देगा. ये क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट कंसिडरेशन, बट इट शुड बी वॉलंटरी, राइट? एग्जाम्पल नंबर 26 देखिए एक बार बच्चों. एक क्वेरी है एक बच्चे की, बार बार आ रही है, मैं बता देता हूँ. चलिए, हालांकि रेलेवेंट नहीं थी. चलिए, आई एम लुकिंग फॉर योर गाइडेंस सर. आई एम एस्पिरेंट ऑफ जून 2023 but my preparation is not on point, so should I skip June 2023 attempt? तो मेरी तैयारी नहीं हुई है, क्या मैं जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो पाई है, तो क्या मैं स्किप करूं? देखिए, मैं स्किप करने के लिए कभी नहीं करता. आई नेवर एडवाइज फॉर स्किप द अटेम्प्ट. एवरीवन मस्ट गिव द अटेम्प्ट. अगर तैयारी नहीं है, आप अटेम्प्ट नहीं दोगे तो डेफिनेटली फेल होगे. पर आप अटेम्प्ट दो, कुछ तो सीखोगे वहां पर. प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन देखोगे, अगर तैयारी नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा हो आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन आपने तैयारी कर ली हो, तो सकता है आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए, राइट? तो अटेम्प्ट शुड, यू मस्ट गिव दैट. Example 26. Mr. X had helped his nephew Mr. Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect.
After Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay rupees 10,000. Held this is a valid contract as it is compensation for past voluntary service. मिस्टर एक्स ने अपने भतीजे की हेल्प करी एक कोर्ट केस में. जब वो केस जीत गया तो उसने कहा मैं आपको 10,000 दूंगा. ये क्या है? वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इट इज पास्ट कंसिडरेशन. नेक्स्ट पॉइंट. प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट. लिसन. सी. Suppose Mr. X has taken a loan of rupees 1 lakh from Mr. Y. Mr. X has taken a loan of rupees 1 lakh from Mr. Y, and 3 years have been passed, no connection between X and Y. X has given a loan of rupees 1 lakh to Mr. Y. Even after 3 years, X not demand the repayment of the loan. After 3 years, this loan becomes time barred. X cannot claim. But after 5 years, Mr. Y promised to pay the time barred debt. Then it is valid promise. But it must be in writing. मिस्टर एक्स ने वाई को लोन दिया 1 लाख रुपए का. 3 साल तक एक्स ने लोन मांगा नहीं तो वो क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया. अब एक्स क्लेम नहीं. लेकिन 5 साल बाद वाई का मन जागा. उसने कहा ठीक है सर मैं आपको पैसा दे दूंगा, वापस कर दूंगा. कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया, लायबिल हो गया वाई. लेकिन ये रिटर्न में होना चाहिए. Where a promise in writing signed by the person making it or by his authorized agent is made to pay a debt barred by limitation is valid without consideration. A is indebted. See, the example is very important for practical question in the exam. A is indebted to C rupees 6,000, but the debt is barred by Limitation Act. A signs a written promise to pay only 5,000 in final settlement. This is valid contract. This is valid contract. But how much can be claimed? Only 5. क्योंकि उसने आज 5,000 की लायबिलिटी एक्सेप्ट करी रिटर्न में, तो 5,000 ही क्लेम कर. Agency, in case of agency, law says section 8185 says no consideration is required. यानी कि agent has, there may be a contract between principal and agent in which agent is performing on behalf of principal, but there is no consideration between principal and agent. It is possible. Law section 185 कहता है कि भैया प्रिंसिपल एजेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि एजेंट प्रिंसिपल बिहाफ पे काम तो करेगा और प्रिंसिपल इसको कोई कंसिडरेशन नहीं देगा. अगर ये तय होता है, वॉलंटरी होता है, विदाउट एनी प्रेशर होता है, इट इज अ वैलिड इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. राइट. कंप्लीटेड गिफ्ट. कंप्लीटेड गिफ्ट मींस मैंने गिफ्ट दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया. आई हैव गिवन द गिफ्ट एंड द डोनी एंड द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द गिफ्ट, हु हैज रिसीविंग द गिफ्ट हैज रिसीव्ड द गिफ्ट. जिसको मैं गिफ्ट दे रहा हूं उसने वो रिसीव कर लिया. Mr. A has gifted a car to his friend on his marriage. Now Mr. A cannot take back his car even if there is no consideration. A ने अपने फ्रेंड को कार दी, अब A से वापस नहीं. Charity, donation. If a promisee undertakes the liability on the promise of a person to contribute to charity, the contract shall be. This is the important example. See, Mr. A promised the secretary of committee of temple to donate 1 lakh rupees for renovation of a temple. On the faith of his promise, secretary has incurred some cost for renovation. Now, secretary can claim from Mr. A even the contract was without consideration. क्या कह रहा है? A ने प्रॉमिस किया मंदिर के सचिव को, सेक्रेटरी को, कि भैया मैं 1 लाख रुपया दूंगा, आप काम शुरू कराओ, रिनोवेशन कराओ मंदिर का. सेक्रेटरी बेचारे ने काम शुरू करा दिया. अब सेक्रेटरी ए से वो 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है इवन इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं. राइट. तो चैरिटी में भी विदाउट कंसिडरेशन. बेलमेंट. बेलमेंट मीन्स टू गिव समथिंग to someone, to give something to someone for a specific purpose or for a specific time, and with the condition
that after the accomplishment of purpose or expiry of time, the goods will be returned to the person who is giving it. Bailment क्या है? कोई चीज किसी को देना किसी उद्देश्य के लिए या किसी समय के लिए, और जो उद्देश्य पूरा हो जाएगा या समय पूरा हो जाएगा तो वो चीज वापस मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग अ बुक टू योर फ्रेंड फॉर स्टडी पर्पस. This is bailment because after the study the book will be returned to you. This may be without consideration. So bailment may be without consideration. No consideration is required to affect the content of bailment. Section 148 of the Indian Contract Act 1872 defines a bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person. Example: lending of the books for his to a friend for his use without any cost. Right? इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? Bailment. So before starting, what are the cases where a contract without consideration is possible? First is without consideration possible. First is on account of natural love and affection, but it should be written and registered. Past consideration for written promise for time bar debt. In case of agency, in case of gift, in case of charity, in case of bailment. ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों. चलिए अब आते हैं Sir, in example number 23, what if the agricultural land itself was used for agricultural industrial purpose afterward, then still the condition will be bound or not to the successor. She is saying कि सर मान लीजिए जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसे इंडस्ट्री में यूज कर दिया तो क्या बाउंड होगी? डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट. इफ एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि ओनली द रेस्ट्रिक्शन इज बाउंडिंग ओनली व्हेन द लैंड इज यूज्ड एग्रीकल्चर पर्पस, तो इंडस्ट्रियल यूज होने पर वो बाउंड नहीं. राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन: ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू is known as doctrine of priority of contract, doctrine of privity of contract, doctrine of privacy of contract, doctrine of separation of contract. Next question. Agreement without consideration is valid when made out of natural love and affection due to near relationship, orally to pay time bar debt, none of the above, all of the above. The general rule is that agreement made without consideration is void, given in section 23, 24, 25, 26. Consideration is defined in section 2, clause A, B, C, or D. Which of the following is not an exception to the rule no consideration, no contract? Love and affection, compensation for past voluntary services, both of the above, none of the above. Exception क्या है?
An agreement is if concession is furnished by stranger, void, voidable, illegal, valid. Next. A minor who is not the party to contract but in the whose favor some trust or charge under some specific properties created can sue, can sue without court permission, can sue with permission of other parties. A minor who is not the party to contract but in whose favor some trust or charge under some specific properties created can sue, can sue with the court permission, can sue with permission of other parties. So this was the penalty shootout 2, right बच्चों? अभी एक क्वेरी है, X sends a parcel through ABC Limited. Y to Y on loss of parcel. Can Y sue ABC Limited for loss? Definitely yes. चलिए, see the answers. एक बार आंसर देखते हैं बच्चों. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सभी का सही दिख रहा है मुझे. बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ गए. नेक्स्ट, ये कई लोगों का गलत दिख रहा है मुझे. इसका सेकंड का आंसर है A. B is not the right option because it is orally, right? Some of you have mentioned the D answer. Third, section 25. काफी लोगों का सही आ रहा है ऑप्शन ये वाला. Fourth, consideration defined in D. Next. No concession, no contract. The right option is C. Both love and affection वाला option भी था और compulsory for voluntary services. 6. An agreement is perfectly valid if consideration is furnished by stranger. Last, minor can file the suit. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन है आप लोगों में से. First one is Mr. Saurabh. Congratulations, beta. Second is Miss P. Yamin. Congratulations.
Last one is Mr. Krishna Singh. Congratulations, and I should congratulate all of you who got all the answer correct. Someone is saying, sir, fifth should be D. Oh, right. इसमें error है. I think she is right. Which of following is not लगा हुआ है बच्चे, ये not हटना था, प्रिंटिंग एरर रह गई है. Which is an exception. ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आपकी टेस्ट केवल रिवाइज करने के लिए पर्पस था. मेरा टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन व्हाट वी हैव डिस्कस. ऐसा नहीं है कि मुझे आपको मार्किंग करना है या आपको अच्छा है बुरा बताना है, ठीक है ना. सो ये नॉट हटाएगा तो ये बोथ आएगा, अगर नॉट है तो आंसर डी होगा, राइट. सो एट दिस प्लेस वी आर एंडिंग द क्लास फॉर टुडे. होपफुली you have enjoyed the class, but please listen my words. आप जाके पहले रिवीजन करिएगा, कल मॉर्निंग में करिए जब या इवनिंग में करिए. एक बार रिवीजन कर लेंगे ये परमानेंट सेट हो जाएगा दिमाग. तो नेक्स्ट क्लास होगी जब आपका टेस्ट होगा तो आपके मार्क्स आप सभी के मार्क्स 10 out of 10. तो प्लीज रिवाइज दिस ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे बिफोर द नेक्स्ट क्लास. एंड we are taking the test in each and every class before starting the class, in fact. तो तैयार होके आइएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू बच्चों. द क्लास इज ओवर. थैंक यू सो मच.